Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Love You Shakespeare series, and today we will talk about a critical analysis of the play Tempest. We have already read the summary in detail, and today we will talk about some of the critical aspects of the play. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. And these are the timings of your classes: Monday to Friday at 8:30 p.m., Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Good evening, Ektaba. Welcome. So let's start with the critical analysis. So first of all, we will look at the element of magic. And you all know that magic and supernatural elements, these are very common in Elizabethan drama, and Shakespeare has used it a number of times in especially in his comedies like A Midsummer Night's Dream, Tempest, and also some other plays. So here also magic is there, and magic and supernatural elements, basically both things are there. So here these two things are combined together, magic and supernatural elements, and they form a single entity. Good evening Barsha, welcome. तो कैसा है यूज ऑफ मैजिक देखो, द एलिमेंट ऑफ मैजिक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रीट विजर्ड. Okay, the element of magic was influenced by the street wizard. So Shakespeare has taken it from the street wizards because this was a very popular profession at the time of Elizabethan age. And here we can see that the main character Prospero, he is a magician. And this particular theme of magic was inspired by Neoplatonic authors like Ficino, Plotinus, Iamblichus, etc. So some Neoplatonic authors, they inspired this idea of magic given by Shakespeare here in this play. And in this play, magic is used to control the spirit, control the spiritual intelligences. We have found that Prospero has used magic to control Ariel and Caliban and other spirits जिसको वो mask form करने में काम पर लगा रहे हैं. तो these things are associated with magic. So magic is a symbol of power here basically. Good evening, Jogesh. Welcome. Prospero's magic is not fatal like that of Foster's. This is important because Foster studied black magic and finally it took away his own life. But Prospero's magic is not like that. It is not so much fatal, just it is asserting the power. He uses magic to control the island and natural objects. This is the main point. Magic is the controlling force, and magic is the only power of Prospero through which he can exercise it over the island and the people. Caliban and Ariel are his servants, as I have already told you. So Prospero basically uses magic to bring order and sanity in Antonio's mind. Yes, this is also important. Magic helps to control the human beings, the enemies of Prospero. ठीक है. And Ferdinand and Miranda's marriage, इस पर भी magic का एक बहुत बड़ा रोल है. Prospero finally becomes a dictator and exploits Caliban and Ariel with his magical power. गुड इवनिंग एलिना, वेलकम. तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉस्पेरस मैजिक इज नॉट सो मच फेटल, बट it is also true that magic को in the initial stage of the play Prospero has used to control the island to exert his power, but gradually when Prospero becomes a dictator तो वो magic को use कर रहे हैं as an exploitative tool to exploit his own servants like Ariel and Ariel and Caliban.
And his magic is synonymous with magic books. That is why Caliban uh, is saying to Stefano that Prospero's power lies in the magic books, and if we want to weaken Prospero's confidence, then we must destroy Prospero's magic books. ठीक है, तो magic becomes synonymous with magic books here, and the play is set also in a far off island which is enchanted with magic. तो setting भी वैसे ही जगह पर किया है शेक्सपियर ने कि एक ऐसी जगह है जिस जगह में मैजिक का इस्तेमाल हो सकता है, which is a far off island from Italy, and it is basically an island which has some kind of supernatural element already there, because यहाँ का इस island का जो main controller tha, the previous controller, that was Psychorax. She himself is a practitioner of magic. Though her magic was black magic, she herself was a practitioner of magic. Using magic, Prospero controls Ariel but fails to dominate Caliban. Yes, this is very important thing. कि मैजिक शेक्सपियर ने बहुत ब्यूटीफुली इस्तेमाल किया है इस प्ले में, एंड मैजिक समटाइम्स also gives us a lesson that you cannot conquer everything through magic. That is also a very important thing. And Prospero's magic, though it has done so many miracles, Prospero is very successful as a magician, but finally we can realize its limitations. Because Ariel को तो वो control करे है using magic, but Caliban, who is a brute, who is almost a beast kind of existence, half beast half human kind of existence, उनके ऊपर मैजिक काम नहीं कर रहे. मतलब कैलिबन till at the end of the play he remains the same, he remains obstinate, he remains protestive, right? uh, protesting against Prospero's dominance. तो कैलिबन का जो कैरेक्टर था शुरुआत में वैसे ही है. Magic cannot change him, right? So finally, Prospero realizes that his magic has much limitations. It can make him powerful but fails to change human nature. And that is why at the end of the play, Prospero ये बता रहे हैं कि I will abjure magic, just doing this final act. This is the first and last act, and after that I will be away from the world of magic. Okay, so this is about the first important element, use of magic. Second important concept यहाँ पर क्या है? ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये किस टाइप से है प्ले के अंदर, अब हम देखते हैं. ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो बेसिकली टेम्पेस्ट और जो भी प्ले आप कहो एलिजाबेथन एज में, ऑलमोस्ट सभी प्लेस में एक रेनेसां स्पिरिट है. रेनेसांस स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी जो हमने फॉस्टस में भी देखा वो यहाँ पर भी है. फॉस्टस में तो है रेनेसा स्पिरिट ऑफ नॉलेज, राइट, एंड यहाँ पर है रेनेसा स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी. Because when Shakespeare was writing his plays at that time or during the Elizabethan time, it was very popular to discover unknown islands. So discovery of unknown islands, geographical लोकेशंस को ढूंढना, ये उस टाइम का एक बहुत पॉपुलर चॉइस था. ठीक है, एंड इट वाज वेरी मच एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस जर्नी. तो वही स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी टेम्पेस्ट के अंदर भी शेक्सपियर ने बिल्ड किया है. गुड इवनिंग राजकिशोर, वेलकम. The island is located somewhere between Naples and Tunis. If we talk about exact location, then it is located somewhere between Naples and Tunis. Edmond Malone thinks that the title is taken from accounts of storm and shipwreck by Thomas Gates on Bermuda Triangles. तो ये एक क्रिटिक का मानना है कि the main title of the play, The Tempest, it is taken from an adventure story, an adventure travelogue rather, associated with Bermuda Triangle, the mysterious place of the world. तो थॉमस गेट्स का ये लिखा हुआ है, तो वहां से टाइटल शेक्सपियर ने लिया. So we are talking about two different world orders, old world order and new world order. तो old world order को represent कर रहे हैं मिलान. Prospero was the Duke of Milan, तो मिलान represents the old world order. And इससे new world order कैसे create हो रहा है? Because in the summary we have read that Prospero became very much attracted towards the world of magic, and to study magic wholeheartedly
he left the responsibility of the kingdom over his brother Antonio, and taking advantage of that, Antonio disowned Prospero and he banished Prospero and Miranda, right, from the kingdom. So after that banishment, Prospero and Miranda reached in the island. वो यहाँ पर आते हैं and the island represents the new world order, and there he becomes the absolute ruler of the island who can control both the animal and the natural world. So Prospero, as a Duke of Milan, he was unsuccessful, but here he formed a new world order, a kind of new kingdom where Prospero is the sole commander or the sole dictator rather of the kingdom. तो इसके बारे में वो बात कर रहे हैं, एंड दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू आइलैंड और रादर asserting his control over a new island, it is the symbol of new world order. ठीक है, तो बेसिकली तीन ऑर्डर की यहाँ पर बात हो रही है. इफ वी टॉक अबाउट हायरार्की, तो फर्डिनेंड रिप्रेजेंट्स द नोबल ऑर्डर, Ariel is the order in air, and Caliban represents the bestiality or the basic form of instinct. तो इन तीनों वर्ड के ऊपर प्रॉस्पेरो का इक्वल कंट्रोल था. ठीक है, एंड इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्रॉस्पेरो adopts the tool of forgiveness. ठीक है, and here we can find that the villains are transformed and the play ends with happy marriage between Ferdinand and Miranda. यस एकदम राइट. बारमुडा ट्रायंगल, इसके ऊपर एक फिल्म भी है आई थिंक, एक मूवी भी है हॉलीवुड का, शायद यही नाम था, बारमुडा ट्रायंगल. तो यस, इट इज वेरी मिस्टीरियस प्लेस. तो हैप्पी मैरिज के साथ ये प्ले एंड होता है. तो दैट इज द थीम ऑफ ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. दैट ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ चीज का कमी था. ठीक है, प्रॉस्पेरो कुड नॉट कंट्रोल इट, बट जब एक आइलैंड में सेटिंग होता है एक प्ले का, देन यहाँ पर बहुत कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो नॉर्मली नहीं होता था. ठीक है, प्रॉस्पेरो एक्सर्टेड द पावर ऑफ हिज मैजिक फुल्ली ओवर द आइलैंड व्हिच माइट नॉट बी पॉसिबल इन मिलन. And finally क्या होते, Prospero realizes that forgiveness is the best tool and he emerged as a kind of Christ-like figure at the end. ठीक है, तो Prospero सबको माफ कर दे रहे हैं, सभी एनिमीज को माफ कर दे रहे हैं, एंड फाइनली हैप्पी मैरिज के साथ प्ले का एंड होता है. So this is about the theme of old and new world order. ठीक है, moving on to next theme, that is the post colonial elements, which is the very commonly discussed and widely discussed theme in the Tempest, that is post colonial elements. ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट में क्या है, जनरली जो बहुत ही पॉपुलर इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि प्रॉस्पेरोस कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द ब्रिटिश कॉलोनाइजर एंड कैलिबन रिप्रेजेंट्स द नेटिव पीपल who are colonized. क्यों इस टाइप का इंटरप्रिटेशन आ रही है, बिकॉज प्रॉस्पेरो deprives Caliban from his rights and captures the island forcefully. Obviously, Caliban is the future ruler of the island after the death of his mother, Sycorax. But Prospero बाहर से आकर कैलिबन को डिप्राइव करके उस आइलैंड के ऊपर अपना अधिकार को एस्टैब्लिश कर रहे हैं. सो this is how Caliban is deprived. Similarly, जो at the time of independence हमारी कंट्री में हुआ था या फिर अदर पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में हुआ था, कि ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स दे हैव कम फ्रॉम आउटसाइड एंड दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आवर इकोनॉमी, ओवर आवर सोसाइटी, ओवर आवर किंगडम, the rule, the law, everything, and finally they deprived the natives and they tried to gain their own profit. तो इसी के कारण इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, राइट. तो प्रॉस्पेरो भी सेम टू सेम वही काम करते हैं. He tortures Caliban and very interestingly Caliban को डिस्क्राइब करते टाइम बहुत सारे नेगेटिव वर्ड उन्होंने यूज किया है, लाइक मॉन्स्टर, बीस्ट, हैग सीड. Similarly, the colonizer, they treated the colonized people as the storehouse of all negativity. They are black, they are barbaric, they are savage, they are uncivilized, they are ignorant. तो ये सभी जो नेगेटिव
वर्ड्स है, नेगेटिव एडजेक्टिव्स है, इसको वो इस्तेमाल करते थे टू डिस्क्राइब द नेटिव, एंड द वर्ड नेटिव इटसेल्फ इज अ derogatory term for them. So Prospero is doing the same thing. Typical attitude of the colonizers towards colonized white man's burden. And Prospero क्या कोशिश कर रहे हैं after capturing Caliban, he realizes that if Caliban को उनको काम करवाना है as his own servant, then he must teach him something. जैसे व्हाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट था कि द ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स दे told us that we are doing a great job for you because you are under darkness, you are uncivilized, and we the civilized people, we are trying to lift you up from that darkness of ignorance, and we are trying to teach you the western culture, western tradition. So you are the burden on our shoulder, and it is our responsibility to civilize others because we are the supremely educated and the best community of the whole world, right? तो Prospero भी वही काम कर रहे हैं. Caliban raises a perfect native resistance, and Caliban हमेशा protest कर रहे हैं इसके against में. Caliban is asserting, even in the drunken condition, Caliban is asserting that I am the ruler of the island. Prospero has deprived me. He curses Prospero. ठीक है, तो एक परफेक्ट नेटिव रेजिस्टेंस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. ही हैचेस अ कॉन्स्पिरेसी विद द हेल्प ऑफ स्टीफानो एंड ट्रिंकुलो. And finally, when Caliban gains freedom, it symbolizes the freedom of all colonized country, the independence movement. ठीक है, तो इस टाइप से एक पोस्ट कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं इस प्ले का, which is very popular and very common, right? Where Prospero is the colonizer and Caliban is the colonized people. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम आते हैं यूज ऑफ मास्क. यस, मास्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टेम्पेस्ट. 2 बार मास्क यूज हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट व्हाट इज मास्क. So you have learned that in the classes of literary terms, but take a quick recap of that. So mask was popular in Elizabeth's court. Queen Elizabeth's court में mask was very popular form of entertainment. तो मास्क का मेन फीचर क्या है? इट इज अ मल्टीमीडिया ड्रामेटिक परफॉर्मेंस. ठीक है, ड्यूरेशन इज शॉर्टर देन द नॉर्मल ड्रामा. एब्सोल्युटली. रिटन इन राइम्ड वर्ड्स. कैरेक्टर्स आर जनरली गॉड्स, गॉडेसेस और पर्सोनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज. ठीक है, तो इसी टाइप का कैरेक्टर होता है. एंड पर्पस क्या होता है? पर्पस इज टू सेलिब्रेट मैरिज और एंटरटेनमेंट फॉर कोर्ट पीपल. कोई भी मतलब एंटरटेनिंग ओकेशन हो, कुछ भी चीज को सेलिब्रेट करना हो, तो मास्क का एक शॉर्ट परफॉर्मेंस होता है. ठीक है, गुड इवनिंग मुकेश, वेलकम. तो एक शॉर्ट परफॉर्मेंस होता है मास्क का. अब टेम्पेस्ट में मास्क कैसे यूज हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एक्ट 3 सीन 3 वी फाइंड अ बैंक्वेट organized by some strange spirits before Alonso and his crew. अचानक एक बैंक्वेट क्रिएट हो रहा है with the indication of Prospero, obviously, before Alonso and his crew. And very significantly, the play was first acted. The play was first acted on Hallowmas night, 1st November 1611, in the banquet hall of Whitehall Palace. ठीक है, तो ये एक्ट भी हुआ था एज अ कोर्ट परफॉर्मेंस और इनसाइड अ कोर्ट और इनसाइड अ पैलेस. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. तो एक मास्क यहाँ पर है, एक शॉर्ट एंटरटेनमेंट जो कि एक बैंक्वेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. And then the most important mask element is there in Act 4 Scene 1 when Prospero orders Ariel to perform a mask to celebrate the marriage. एंड उसी मास्क में हमें देखने को मिलता है कि गॉडेस सेरेस आते हैं, जूनो आते हैं. दे ऑफर ब्लेसिंग्स टू फर्डिनांड एंड मिरांडा, राइट? And finally Prospero reveals his identity at the end. His identity means the main purpose of organizing all this, organizing the mask, creating the tempest, the storm. तो सभी चीज के लिए वो मतलब कॉन्फेस कर रहे हैं कि yes, I am the creator of all these things. So it is a normal tradition of mask performance that at the end of the performance each actor or actress will reveal their own identity. वो मास्क को उतार कर अपनी आइडेंटिटी को बताएगा. दैट वाज द रूल, एंड प्रॉस्पेरो उसी रूल को फॉलो करता है.
बट वेरी इंटरेस्टिंगली देयर इज नो डायरेक्ट रेफरेंस टू द किंग और क्वीन, कोई रेफरेंस नहीं है। यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज क्रीचर्स के बारे में हमें पता चलता है, लाइक हार्पी, फिनिक्स एटसेट्रा। दे अपीयर टू परफॉर्म द मास्क। ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर नर्चर डिबेट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेम्पेस्ट का, नेचर नर्चर डिबेट। तो दिस डिबेट फर्स्ट ऑकर्ड इन द फेयरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। तो नेचर क्या है, नर्चर क्या है? हियर नेचर डजंट मीन दैट नेचुरल सराउंडिंग्स, इट मीन्स द नेचुरल एबिलिटीज ऑफ मेन इनहेरेंट इन देम। मतलब जो इनबॉर्न टैलेंट होता है वो है नेचर, एंड नर्चर का मतलब होता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट दैट अ मैन रिसीव्स फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है। तो शेक्सपियर ये बता रहे हैं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ कैलिबन। Caliban is very close to nature. His name is an anagram of cannibal. Very interestingly, cannibal से Caliban, right? And Prospero tries to civilize him, but Caliban only receives the language so that he can curse Prospero. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लैंग्वेज सिखाया। On the other hand, Ferdinand and Miranda, they represent the production of the highest form of art, the nobility, the culture, tradition, सबको रिप्रेजेंट करते हैं फर्डिनांड एंड मिरांडा। एंड बेसिकली शेक्सपियर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि द पीपल हु हैव इनबॉर्न टैलेंट, who have nature in them, essential nobility in blood, can only receive the nurture, and a beast like Caliban fails to achieve the same। ये बहुत ही एक मतलब कॉमन नोशन है कि देखो अक्सर हम ये कहते हैं कि द पीपल हु हैव सम इनबॉर्न टैलेंट, अगर हम उस टैलेंट को और बढ़ावा देने के लिए कुछ करें बाहर से, तो वो एक मतलब एक्सेप्शनल जगह पर पहुंच सकते, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो। बट इफ द पर्सन डजंट हैव एनी टैलेंट, और आप बाहर से उनको पुश कर रहे हो, आप उनको एक्सटर्नली सपोर्ट दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उनको मेंटली सपोर्ट दे रहे हो, तो वो सीख नहीं पाएगा, बिकॉज उसके अंदर वो चीज नहीं है जिसको हम कहते हैं कि एक डिजायर और अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू लर्न समथिंग। अगर वो चीज नहीं है तो आप बाहर से जितने भी डालो आप नहीं कर पाओ, राइट? दैट इज व्हाई ऑल पीपल आर नॉट जीनियस, ऑल पीपल आर नॉट एक्सेप्शनल, सम पीपल आर एक्सेप्शनल। व्हाई? सभी पर्सन तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, सभी एक जैसे डिग्री लेते हैं, बट कुछ पर्सन एक एक्सेप्शनल कुछ काम करता है, हम जैसे आम आदमी नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि उसके अंदर जो नेचुरल टैलेंट है, जो नोबिलिटी इन ब्लड, वो बहुत ही ज्यादा है, एंड बाहर से उनको जो पुश मिला है उससे वो बहुत आगे निकल चुका। So that is the main thing which Shakespeare is trying to establish, and वो कैलिबन के थ्रू ये बता रहे हैं कि Prospero has tried his best to teach Caliban, but Caliban himself is a beast। तो उनके अंदर कोई नोबिलिटी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। ही इज एन अनसैवेज्ड, ब्रूटल, हाफ बीस्ट हाफ ह्यूमन काइंड ऑफ फिगर। तो उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज सीखा है, बाकी कुछ भी सिविलाइजेशन की स्पेसिमेन वो सीख नहीं पाते। इसका कारण यह है कि उसके ब्लड में एसेंशियल नोबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो दिस इज द नेचर नर्चर डिबेट। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज प्रॉस्पेरोस कैरेक्टर। हमने अभी तक जो भी बताया है उसमें प्रॉस्पेरो का कैरेक्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, बट स्टिल लुक एट द मेन पॉइंट। तो this is also a very popular interpretation that Tempest, as it is almost the last play of Shakespeare, some critics think that when Prospero says that I am abjuring the world of magic to create something new, बहुत सारे critics ने ये कहा है कि actually Shakespeare is taking farewell from theatre forever. Shakespeare is saying that I will write no drama after that, and I'm taking farewell from all sorts of literary writing. So Prospero's farewell from magic is equal to Shakespeare's farewell from stage. ऐसे करके भी बहुत सारे critics ने इसको interpret किया है. So this is a quotation in support of that remark. ट्रैची ने बताया है in his book Shakespeare's Final Period. मैं बस आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इसको मतलब एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, but very easily written so that you can understand. तो ट्रैची का क्या comment है? Bored with people, bored with real life, bored with drama, bored in fact with everything except
poetry and poetical dreams. He is no longer interested, one often feels, in what happens or who says what, so long as he can find a place for a faultless lyric or a new unimagines rhythmical effect or a grand mystic speech. मतलब Strachey is saying that Shakespeare is getting attracted to poetry and he is taking farewell from the world of theatre. तो शायद यही symbolize कर रहे हैं through the character of Prospero. Prospero's character may be inspired from William Thomas's work History of Italy. Direct source ये भी हो सकता है. And the name is very much interesting. Prospero means one who is prosperous or very fortunate. As a king, Prospero neglects his duty and is betrayed by his brother Antonio. ठीक है? So Prospero as a king is not so successful. But as a father, he is very much sympathetic to Miranda, and Miranda is his only hope of survival. ये भी हमने देखा summary में. So now he becomes matured regarding human mind and his potentiality for evil. ये भी एक बात है कि when Prospero was in Milan, उनको ये नहीं पता था कि evil क्या होता है. He trusted his brother Antonio blindly. ठीक है, बट जब वो इस आइलैंड में आ रहे हैं, वो कैलिबन को देख रहे हैं, बाकी कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, Prospero gradually became mature. He realized that human beings have tremendous potentiality of doing evil. जैसे Lord of the Flies exposes that idea, the tremendous human potentiality of evil. जो हर ह्यूमन बींग्स के अंदर है वो बाहर आते हैं जब a group of boys they are without the control, without the supervision of the adult, how much mess they are creating on that island. ठीक है, तो यहाँ पर भी Prospero को ये realization होता है कि okay, we cannot trust human beings so blindly because human beings are evil by nature. And इसका एक reflection हमें देखने को मिलता है कहाँ पर कि जब Ferdinand appears and Miranda declares her love for him. Still, Prospero cannot trust Ferdinand fully. He puts him in a trial. वो बहुत सारे टेस्ट लेता है and when Ferdinand passes all the tests, Prospero grants permission for the marriage. Then क्या है? Prospero is an expert magician. He controls air, water, and earth through magic. We have already discussed that. His magic has no evil purpose like that of Faustus. Yes. He raises the storm only to offer his enemies a lesson, not to destroy them completely. ये भी एक बात है, एकदम फर्स्ट सीन में हमने देखा कि the storm is raised and एरियल को वो बात में बता रहे हैं कि not a hair perished. किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना है, इस स्टॉर्म को अभी खत्म कर दो. जो मैंने बताने की कोशिश कर रही थी वो बताना कंप्लीट हो गया. Now you can stop the storm. So that is the purpose of Prospero, to teach his enemies a lesson, to give them a warning. But Prospero as a master is very cruel. He behaves cruelly with Caliban like a colonizer. But at the end he emerges as a Christ-like figure who can forgive everyone. वो भी मैंने बताया. And finally he also realizes the limitation of his magic, that magic cannot change human nature. Forgiveness is the only medium. ये भी उनको पता चलता है at the end of the play. So this is about the character of Prospero. Okay, so these are some of the critical aspects of the Tempest. I hope I have summed up the major points. तो यहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हो. अगर आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिख रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशंस में, तो वो भी आप बना सकते हो. These are the major areas जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है while analyzing the Tempest. ठीक है, so that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And these are the timings of your classes: Monday to Friday at 8:30 p.m, Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. And tomorrow at 8:30 p.m, we will do a class on archetypal criticism. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. See you all tomorrow at 8:30 p.m.